Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम व्यापार की खबरें आप तक लेकर आएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा शुरू करेंगे, मगर उससे पहले अनुभा जी, हेडलाइंस। Thank you, Prachi. Benchmark domestic indices close on a bearish note. Sensex declines over 300 points. Nifty settles at 26,250. Major Asian markets end with gains. And global crude oil prices rise. देश के प्रमुख शेयर सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 300 अंक से अधिक गिरा। निफ्टी 26,250 पर बंद हुआ। प्रमुख एशियाई शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं। And listeners, since it's a Monday today, we will be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business or stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us with your queries on these numbers. The numbers are 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. Do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. श्रोताओं, क्योंकि आज सोमवार है और आज हम खबरों के साथ साथ आपके प्रश्नों को भी इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। व्यापार हो, अर्थव्यवस्था हो या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल हो, उसे पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं सीधे तौर पर। ये नंबर है 23314444, 23421050 और 23310464। इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड डायल करना न भूलें। लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। रुक करते हैं आज की पहली खबर की तरफ। But Prachi, before you start with the top news of the day, there is a very important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And Prachi, over to you now. तो श्रोताओं, एक बार फिर से रुक करते हैं आज की पहली खबर की तरफ। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज सीमित दायरे में कारोबार करके गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 322 अंक यानी 0.38% गिरकर 85,440 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 78 अंक यानी 0.3% गिरकर 26,250 के स्तर पर आ गया। हालांकि आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार सूचकांकों में कम बढ़त देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही सूचकांकों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। Benchmark domestic equity indexes, the Sensex and the Nifty, ended on a bearish note after a range-bound trade today. The Sensex fell 322 points or 0.38% to close at 85,440, while the Nifty dipped 78 points or 0.3% to settle at 26,250. However, the broader market indices at the Bombay Stock Exchange edged up.
The mid-cap index as well as the small-cap index both gained marginally. सेंसेक्स में शामिल 30 में से 16 कंपनियों के शेयरों में आज तेजी आई। शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनियों में सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 2.6% से अधिक, हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.6% से अधिक और टाटा स्टील्स में लगभग 1.6% की वृद्धि हुई। सबसे अधिक नुकसान उठाने वाली कंपनियों में सर्वप्रथम HDFC बैंक 2.3% से अधिक, इन्फोसिस 2.1% और HCL टेक के शेयरों में 2% की गिरावट आई। Among the sectoral indices at the BSE, 12 out of 22 sectors edged lower. Among the top laggards, IT dropped almost 1.4%. Focused IT as well as oil and gas both dipped over nearly 1.2%, and energy lost more than 0.9%. In the gainers, realty climbed almost 2.2%, consumer durables gained over 1.2%, and commodities rose nearly 0.6%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,545 companies declined, shares of 1,723 companies advanced, and shares of 203 companies remained unchanged. और श्रोताओं, बात अब होगी रुपये की। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 9 पैसे गिरकर 90.28 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 98.6 पर कारोबार कर रहा था। आइए अब रुख करते हैं एशिया और यूरोप की तरफ। प्रमुख एशियाई शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक 3.4% से अधिक बढ़कर 4,457 के नए उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा। जापान का निकेई सूचकांक लगभग 3% बढ़ा। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक लगभग 1.4% ऊपर बंद हुआ। वहीं अगर हम बात सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम्स की करें तो सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स 0.5% से अधिक बढ़ा और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक सकारात्मक रुझान के साथ बंद हुआ। बात अगर यूरोप की करें तो प्रमुख यूरोपीय सूचकांक आज सकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहे थे। जर्मनी का डैक्स 1% बढ़ा। वहीं अगर बात लंदन के फुटसी की करें तो लंदन का फुटसी और फ्रांस का कैक दोनों अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक लगभग 0.1% की बढ़त के साथ नजर आए। Let's move on to the next story. The year 2025 stands as a defining chapter in India's development journey. It saw policies translate into progress and intent into impact. Today, in the special series, Year of Reforms, we bring you India's progress in the energy sector in 2025. India's energy sector in 2025 marked a year when long-pending reforms across power, nuclear energy, clean transition and strategic materials finally converged into execution. With the passage of the Shanti Bill, India ended a decades-long stagnation in civil nuclear sector. The reform opened the door to private participation while strengthening safety and accountability norms. Prime Minister Narendra Modi said that India is moving ahead with the plan to increase the nuclear energy capacity by more than 10 times by 2047. In 2025, India's strategic shift on critical minerals through the National Critical Mineral Mission brought long-ignored vulnerabilities into sharp focus, strengthening the power sector of the nation. The Electricity Amendment Bill 2025 prioritized competition in power distribution, network modernization and financial discipline. Meanwhile, in renewable energy, 2025 reinforced India's credibility as a global leader. From large solar parks and wind corridors to rooftop solar under PM Surya Ghar and farmer-focused PM Kusum schemes, clean energy expansion reached homes, farms and industries alike.
By mid-2025, India ranked 4th globally in total renewable capacity, 4th in wind and 3rd in solar. Non-fossil fuel sources now account for around 44% of installed power capacity, surpassing the 2030 target, and emission intensity of GDP has fallen consistently. India enhanced its energy security and strengthened its position in the global clean energy sector in 2025. With Soumya Saran, Akshit Vaidyan, Akashvani News, Delhi. श्रोताओं, आइए देखते हैं कि खबरों के पिटारे में और क्या है हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 11 वर्ष में देश के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 6 गुना और निर्यात 8 गुना बढ़ गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने बताया कि एप्पल ने वर्ष 2025 में $50 अरब मूल्य के मोबाइल फोन निर्यात किए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रगति से इलेक्ट्रॉनिक सामान सबसे अधिक निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं में शामिल हो गए हैं। And Prachi, for those of our listeners who have just tuned into Market Mantra, let me tell them what happened in the markets today. So the benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, ended on a bearish note after a range-bound trade today. The Sensex fell 322 points or 0.38% to close at 85,440. While the Nifty dipped 78 points or 0.3% to settle at 26,250. However, the broader market indices at the Bombay Stock Exchange edged up. The mid-cap index as well as the small-cap index both gained marginally. देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज सीमित दायरे में कारोबार करके गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 322 अंक यानी 0.38% गिरकर 85,440 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 78 अंक यानी 0.3% गिरकर 26,250 के स्तर पर आ गया। हालांकि आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार सूचकांकों में कम बढ़त देखी गई। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही सूचकांकों में मामूली वृद्धि दर्ज हुई। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 16 कंपनियों के शेयरों में तेजी आई। शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनियों में सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 2.6% से अधिक, हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.6% से अधिक और टाटा स्टील में लगभग 1.6% की वृद्धि हुई। सबसे अधिक नुकसान उठाने वाली कंपनियों की अगर बात करें तो सबसे अधिक नुकसान सर्वप्रथम HDFC बैंक 2.3% से अधिक, इन्फोसिस 2.1% और HCL टेक के शेयरों में 2% की गिरावट आई। Let's talk about the sectoral indices at the BSE. So 12 out of 22 sectors at the BSE edged lower. Among the top laggards, IT dropped almost 1.4%. Focused IT as well as oil and gas both dipped over nearly 1.2% and energy lost more than 0.9%. In the gainers, realty climbed almost 2.2%, consumer durables gained over 1.2%, and commodities rose nearly 0.6%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,545 companies declined, shares of 1,723 companies advanced, and shares of 203 companies remained unchanged. And now we have been हमारे साथ अमन जुड़ गए हैं। अमन अग्रवाल जी हमारे एक्सपर्ट। So, Aman, welcome to Market Mantra. Namaskar. Aman, my first question to you is, we saw that the markets were, in a range-bound trade today. What were the factors that affected the markets today? I would say it's a normal correction which has happened. There is not too much to be looked upon inside the market. We have already seen the benchmark of the BSE being crossed and even the NSE. So there is a natural fall which is expected, and that has happened. It is not too much of something which is a estimate, neither domestically nor internationally. So you are saying that whatever happened, the U.S. action in Venezuela has had not had much of an impact on the markets? No, I don't think that is making a major impact. Either the wars or whatever has happened in Venezuela or something will not expect it to have an impact.
On the other hand, actually gold buying has been bullish extensively, and there might be a reason of reallocation of assets where people withdraw money from the stock market and invest in the gold. Right. And now we have our first caller of the day. Amit is calling us from Delhi. Amit, welcome to Market Mantra. Please ask your question. नमस्कार मैडम आप लोगों को। और सर से मेरा ये प्रश्न है कि सर जैसे कि मनरेगा की अभी जो 125 दिन का सरकार ने निर्धारित किया है सर। हेलो जी, ये अपना सवाल पूछे। हाँ, तो सर मैं ये कह रहा था जैसे कि हमारे देश में जब होता है ना सर की अति वर्षा होती है तो हमारे भूस्तर जो जल का भूस्तर भी कम हो रहा है। तो मैं सरकार मैं चाहता हूँ कि मनरेगा में जो श्रमिक लगते हैं ग्राम पंचायत लेवल पे ना सर, एक बड़े बड़े तालाब का कम से कम एक गांव में कम से कम एक तालाब अगर बन जाते मनरेगा के तहत तो सर उसमें क्या होता कि मजदूरों का सही उपयोग भी हो जाता और वहाँ जल संचय भी हो जाता, वर्षा जल संचय भी हो जाता एक तो, और दूसरी भूमिगत जल स्तर भी बढ़ जाता सर। धन्यवाद सर। अमित जी, आपका सवाल क्या है? यहाँ सुझाव दिया है वो सरकार को देखना है कि क्या कर सकती है, और जो सुझाव दिया आपने अच्छा दिया जी। तो as we were discussing Aman, about the markets, so one of the other things that in the past year we have seen is that 225 we saw that the foreign investors, foreign institutional investors, have withdrawn quite a large sum from India, or Indian market. So, do you see this trend to continue, or can we expect it to turn around? This is again a normal trend because the closing happens in December. Mm-hmm. And I have spoken at All India Radio also multiple times, other places as well. December end, because financial year for most companies is January to December for Europe and US, and in certain Asian countries also. So all those companies where the closing year is December, like in India, जैसे हिंदुस्तान में अप्रैल से मार्च होता है, ज्यादातर जगह जनवरी से दिसंबर होता है. So wherever this kind of a closing is there, they will have to book their profits and show their balance sheets up. And that is why massive selling has been happening in the months of December. Although despite those selling, we have seen a record, result in January beginning for stock market itself. So I think that is remarkable that despite FII selling extensively, the Indian investors are bullish on the market. जी। और अनुभा गाजियाबाद से हमारे साथ जय कुमार जुड़ रहे हैं। जय जी, अपना सवाल पूछिए। मार्केट मंत्रा टीम को मेरा नमस्कार। 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 मेरा सवाल है कि अभी जो यूएस ने वेनेजुएला पर जो अटैक किया है, जी, उसका क्या कारण है, और दूसरा इसका इंडियन मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए जी, जहाँ तक उसका क्या कारण है वो तो अमेरिका ही जानता होगा क्या कारण है। उन्होंने अपने कारण रखे हैं, काफी और देशों ने उसको नकारा भी है। जहाँ तक प्रभाव की बात है, उसका हिंदुस्तान पे डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, ऑयल प्राइसेस जो है जो बढ़ी है, अब आपने को देखने को मिला होगा, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ी है, वो बढ़ती हुई नजर थोड़ी आएंगी अगले 2-3 हफ्ते, क्योंकि वेनेजुएला एक मेजर प्रोड्यूसर है ऑयल का, और वो चाइना को और कुछ कंट्रीज को ऑयल बेच रहा था जो अमेरिका को नहीं पसंद आ रहा था। तो जिस वजह से कुछ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उछाल देखने को मिलेगा। जी, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बैंक ऑफ अमेरिका ने मजबूत नीतिगत सुधारों और घरेलू खपत के आधार पर चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि दर को 7% से बढ़ाकर 7.6% कर दिया है। बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए वृद्धि दर अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। And now let's take the next caller from Bhopal. Shankar is with us online. Shankar, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Good evening, Market Mantra team. Good evening. So my question is about this the same event which has happened in Latin America. Many specialists are not coming forward, but the fact should be that India. So it should be unfrozen and India would get the return on those investments on the oil. Is it true? And this will also unleash open a lot of oil from Venezuela to the market, and it will benefit India. So is it true, or just we are not telling the people are not telling the truth, or we don't know what's going to happen? As far as oil imports for India are concerned, we are not actually importing oil from Venezuela. Under the BRICS and structures, we do have oil contracts going on with
Russia and a couple of other countries, but not with Venezuela. So that is not expected to impact India as such immediately. But since it will impact the overall market, so we'll see the oil prices rise. And that may impact a little bit. But as I said, the oil doesn't make an impact immediately. We only buy about 2% to 3% of our oil needs from the international market. The rest is bought under contracts which are fixed for a period of a year, 2 years. Right. Aman, I would like to draw your attention to the story that Prachi just read a little while ago. The Bank of America has raised its GDP forecast for... The Bank of America has raised its GDP growth forecast for India to 7.6% for the current fiscal. It was earlier estimated to be 7%. How do you see this? No, I think the forecast is welcoming and is very much in line with the GDP growth which is happening. We have had 2 quarters in fact, show a robust growth rate despite the odds which have happened globally. And I think that is something which is remarkably making India go bullish and the sentiments internationally go bullish. अमन जी, बिहार से हमारे पास टिंकू जी कॉल कर रहे हैं अपना सवाल पूछने के लिए. टिंकू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट मंत्र में. कृपया अपना सवाल पूछिए. टिंकू जी, लगता है तकनीकी खराबियों के कारण हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है. So, Aman, as we were discussing about the Bank of America's forecast, now it has cited that robust policy reforms and strong domestic consumption is, are the reasons for this upgrade in the India's GDP growth forecast. So, what are the major policy reforms that think have contributed to this upgrade? Yes, I think the overall reform process adopted by this government, whether it is in the case of education or banking or GST framework and so on and so forth, has majorly impacted the overall growth of the country. Also the fact that most policy framework is in terms of developmental activities and not distributing sweets across the country. Although there have been some sweet distributions like rations and all, which have begun after COVID, which were necessary for the economy to be sustained. But apart from that, the country has kept under control, unlike US, Europe, or even Japan, which has actually distributed extensive sweets, and that's why they're having fiscal discipline being completely shattered. Here, the fiscal discipline by the government is maintained, and that is leading to the reform process bringing results. Right. Now let's take a look at the commodities. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading nearly 0.4% up at $60.98 per barrel, and WTI crude was trading almost 0.5% higher at $57.58 per barrel when reports last came in. अनुभा, बिहार से हमें इसी बीच जो है टिंकू जी का अभी संपर्क टूट गया था, लेकिन अब दोबारा उन्होंने हमें कॉल की है. टिंकू जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है. कृपया अपना सवाल पूछिए. आंध्र प्रदेश काम करेगा क्या? और ये मेजोला को जो ट्रम्प राष्ट्रपति अमेरिका जो बंधक बना ले, क्या होगा? और मैडम, एक और सवाल है मेरा, ये सोना और चांदी जो तेजी से चल रहा है 2026 में क्या स्थिति होगा, ये जानकारी हमें चाहिए. देखिए, पहला प्रश्न तो आपका समझ नहीं आया, लाइन में कुछ डिस्टरबेंस था. पर दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा है सोना और चांदी का, सोना और चांदी थोड़ा स्टेबल रहेगा इस समय. अभी तो आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी अगले 2-3 महीने, बिकॉज शादियों और त्योहारों का सेशन अभी भी चल रहा है, जैसे पिछले 2 महीने से चल रहा है. तो हिंदुस्तान में उसकी खरीदारी काफी की जाती है. दूसरी चीज ये भी देखने को आई है कि आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जहां जो पैसा देता है, वो पिछले 3 सालों से काफी हद तक गोल्ड खरीद रहा है. और सिर्फ आरबीआई नहीं, जो सेंट्रल बैंक हिंदुस्तान का, बाकी काफी सारे सेंट्रल बैंक यूरोप के और अमेरिका के जो हैं वो भी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं. पहले इतना वो गोल्ड नहीं खरीदते थे, तो उस वजह से भी गोल्ड के दाम थोड़े ज्यादा उछाल की तरफ देखने को मिले हैं पिछले साल में. इतना ज्यादा उछाल तो नहीं मिलेगा, बट हाँ, स्टेबल रह के थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिलेगा, और अगले 3 महीने तो रहेगा ही. अमन जी, महाराष्ट्र से मुकुंद हमें कॉल मिला रहे हैं. मुकुंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. कृपया अपना सवाल पूछिए. धन्यवाद. ऑल द मार्केट मंत्रस टीम, हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल द बेस्ट. माय क्वेश्चन फर्स्ट इज, which is scheme is better, PPF or Sukanya?
No, देखिए सुकन्या जो scheme, this Sukanya scheme is primarily for girls who are below the age of 18. So if you have a girl child or a granddaughter or a daughter, then you can invest in that, and that's a very good scheme. It gives a very good return, and then that money comes as a fund for the girl child for her education or growth or whatever she wants to do at a later stage. However, PPF is something which can be done by anybody, whether elderly or young or working, non-working, and they can actually invest, and that's again a tax-free income which comes in, but then you have to hold it because you cannot withdraw that money. There is a lock-in period of about 15 years, although there is a scheme where senior citizens and others can start withdrawing after a period of 5 years, and even normal citizens can also withdraw, take a loan against the deposits which have been made after a certain number of years, but you cannot withdraw the money totally. And that's where there is a lock-in period which comes in but gives a very good return, which is tax-free. So both these schemes are independent and can be adopted simultaneously. That means a person can invest in both schemes simultaneously, but for Sukanya you must have either a daughter or a granddaughter to invest. Aman, we were earlier discussing of course, how the markets, what happened in the markets today, the range-bound trade, but this is just the beginning of year 2026. What are the trends that you're seeing in the Indian markets? Which are the sectors where you feel would, give a better return? No, I think a couple of sectors have been very strong coming from last year and the way government policy framework is going. One is defense. We have been very bullish in terms of not only building our defense but exporting defense, and that's why defense is going to see us rise. Pharmaceutical is another sector which has been growing very fast, not only because we have needs in India but because we are one of the largest exporters of pharmaceutical goods and services across the globe. Thirdly, automobiles is something which is taking a bullish stand, primarily as an outlay of the 10 or 15-year rule which had been adopted to remove the old cars from the roads because of pollution, and that is contributing to another sale of automobile sector in this country, which will keep a bullishness going forward. EV sector and chip structures are something which government has been focusing extensively on. That means the solar run or electricity run cars and vehicles, plus the solar chip structures which are there, which the government again has focused on, will be leading sectors going forward. Manufacturing and other sectors will remain the same. Agriculture is another major factor area of government, but we don't have too many agro-based companies which are listed. So that may not, unless we see some of those coming in, except for food processing units, we may not actually see too much of an agriculture boost in the stock market. So given the fact that, we are seeing this ever-changing geopolitical situation around the world, what would be your advice to the investors? No, I think, first of all, we need to understand we are a domestic market. We are not an international exchange in this country. The overseas investment does come in through listed companies which are listed in India, and by FIIs also, and even by foreign investors, individual investors, HNIs. But that is not to a great extent movers and shakers of the market. It is domestically. Right. So international turmoils do make certain sneezing effects, but not a major impact on Indian market, which has been bullish post-COVID, much stronger than any other economy around the world. And I think that is something which is creatively kept by this government of keeping it strong by keeping the fiscal spending. That means the government spending under control. That's sweet music to our listeners, because you're saying that the Indian markets are not going to be so impacted because the major movers here are the Indian retail investors. Yes. Right. Let's take the next story about commodities. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading almost 1.5% up at 1,38,190 rupees per 10 grams. Silver was trading 2.9% up at 2,43,680 rupees per kilogram a short while ago. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध वाले सोने का मूल्य 1.5% बढ़कर 1,37,765 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी 2.9% बढ़कर 2,43,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। अमन जी, कार्यक्रम में आने और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर। Benchmark domestic indices close on a bearish note. Sensex declines over 300 points. Nifty settles at 26,250. Major Asian markets end with gains, and global crude oil prices rise.
देश के प्रमुख शेयर सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 300 अंक से अधिक गिरा। निफ्टी 26,250 पर बंद हुआ। प्रमुख एशियाई शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी। And that's it in this edition of Market Mantra. For now, from the entire team, goodbye. Namaskar. Market Mantra.